अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाईटेक शॉप। आज हम HP Envy X360 2024 एडिशन विद कोर 7 प्रोसेसर की अनबॉक्सिंग करेंगे और इस लैपटॉप पर हम GTA 5 को इंटेल ग्राफिक पर टेस्ट करेंगे। वीडियो एंड तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बॉक्स अगर देखें तो सेम लास्ट ईयर वाला ही बॉक्स है। इसमें इंटेल का नया प्रोसेसर लगाया हुआ है, इंटेल कोर 7 का। बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये राइट साइड पर स्मॉल बॉक्स में अगर देखें तो यहाँ पर चार्जर प्लस पावर केबल, ये पावर केबल है प्लस ये चार्जर है। चार्जर अगर इस लैपटॉप का आप देखेंगे तो ये HP 65 वॉट चार्जर आता है इस लैपटॉप के साथ विद HP ब्लू पेन। HP Envy X360 एडिशन 2024 ये लेटेस्ट मॉडल है HP Envy का। इसमें 14 जनरेशन का प्रोसेसर नहीं लगाया हुआ, इसमें नया प्रोसेसर है Intel Core 7 का। This processor is the first gen of Intel Core 7 processor which comes with 10 cores and 12 threads. Design and build quality of this laptop is very premium. Streamlined metal design delivers a thinner, lighter PC with greater durability. Thinnest of this laptop is 16.9 mm. Aluminum body color of this laptop is silver with matte finish. Use this laptop all the day with very good battery. This laptop comes with Intel Core 7 processor with Intel graphics. Full size US LED backlight, soft gray keyboard. You can work easily at night with the help of this beautiful LED backlight keyboard. इस लैपटॉप का साइज देखें तो ये 14 इंच में आता है। HP की ब्रांडिंग विद न्यू लोगो। बॉडी मटेरियल एल्युमिनियम की है विद सिल्वर कलर। वेट अगर इस लैपटॉप का आप देखेंगे तो ये 1.5 kg है, काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है, अल्ट्रा स्लिम। रोटेशन अगर इस लैपटॉप का आप देखेंगे तो ये X360 रोटेशन है इस लैपटॉप की। With X360 gets you in the perfect position to work, write, watch and play. This laptop comes with 14-inch FHD micro edge IPS multi-touch with 5 megapixel camera with privacy shutter. Screen to body ratio is 87.36%. Revolutionize your display and see more of what you love with this slim bezel design. Bring the big screen to the small. This laptop features great display real estate in a compact PC. The immersive flicker-free display and crystal clear audio from Poly Studio keep you fully tuned into your few shows, podcast, music and sports plus with long battery life. 16.9 mm thinnest Envy की ब्रांडिंग। बैक साइड पर लेफ्ट साइड पर अगर इस लैपटॉप का आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पर फर्स्ट वन जो है HDMI 2.0 टाइप C 3.1 Gen 2 वेंट पैनल ऑडियो जैक। राइट साइड पर अगर इस लैपटॉप का आप देखेंगे तो फर्स्ट वन जो है ये चार्जिंग पोर्ट, USB 3.2 माइक्रो SD कार्ड रीडर। Beautiful large multi-functional touchpad. Easy to work on this touchpad. Envy की ब्रांडिंग, Poly Studio की ब्रांडिंग, US LED grey backlight keyboard without numpad because it's a 14-inch laptop. इस लैपटॉप का पावर बटन अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड में ही मौजूद है ये पावर बटन प्लस गेमिंग हब बटन। You can change the performance with this gaming hub button. Envy 2024 में प्रोसेसर देखें तो Intel Core 7 150U प्रोसेसर, 10 core CPU, 12 लॉजिकल प्रोसेसर, 12 MB कैश स्पीड, बेस स्पीड 1.8 GHz, टर्बो अप टू 5.4 GHz। परफॉर्मेंस स्कोर और एफिशिएंट स्कोर्स अगर देखें इस लैपटॉप में तो ये आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस स्कोर जो है 2 कोर्स 4 थ्रेड्स हैं, 1.8 GHz, टर्बो अप टू 5.4 GHz।
एफिशिएंट कोर्स देखें तो 8 कोर्स हैं, 8 थ्रेड्स है, 1.2 गीगाहर्ट्ज़ टर्बो अप टू 4.0 गीगाहर्ट्ज़। पी कोर्स की कैश स्पीड देखें तो 12 MB है और ई कोर्स की कैश स्पीड देखें तो 4 MB है। मेमोरी अगर इस लैपटॉप में आप देखें तो 16 GB की मेमोरी लगी हुई है, 8 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की DDR4 की। SSD देखें तो 512 GB NVMe Gen 4 की SSD लगी हुई है, वाईफाई 6 AX21116 मेगाहर्ट्ज़ की वाईफाई चिप लगी हुई है। ग्राफिक्स देखें तो इंटेल ग्राफिक्स है इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप का डिस्प्ले आप देखें तो 14 इंच FHD मल्टी टच एनेबल IPS H2H ग्लास 1080p रेजोल्यूशन माइक्रो एज अप टू 300 नेट्स ब्राइटनेस। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज 87.36%। HP Envy X360 2-in-1 14ES 1023DX की बैटरी रिपोर्ट मैंने बनाई है। डिज़ाइन कैपेसिटी अगर इस लैपटॉप की आप देखेंगे तो 43,000 mAh डिज़ाइन कैपेसिटी है। फुल चार्ज कैपेसिटी जो रह गई है वो 42,000 mAh है। साइकिल काउंट इस लैपटॉप का 1 है। बैटरी की टाइमिंग राउंड अबाउट इस लैपटॉप की 8 to 10 आवर्स है। ये पावर बटन मैंने प्रेस कर दिया है। इस लैपटॉप का बूट टाइम टेस्ट करते हैं। इसमें इंटेल कोर 7 16 GB रैम 512 GB NVMe Gen 4 की SSD लगी हुई है और इस लैपटॉप में विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है। इस लैपटॉप का बूट टाइम देखें तो राउंड अबाउट 12 to 13 सेकेंड्स इसने लिए हैं बूट में। HP Envy X360 14ES 1023DX पर मैं आपको GTA 5 टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसमें इंटेल कोर 7 प्रोसेसर है। इसमें इंटेल के ग्राफिक्स हैं। सेटिंग में अगर ग्राफिक में आप देखें तो ये रिजोल्यूशन इसकी 1080 पर मैंने की हुई है और मैक्सिमम चीज़ें हाई पर है। ये आप देख सकते हैं, वेरी हाई हाई, नॉर्मल हाई हाई। FPS अगर इसका आप देखें तो राउंड अबाउट 30 to 40 FPS ये मुझे हाई सेटिंग पर दे रहा है इंटेल ग्राफिक्स पर। इंटेल कोर 7 प्रोसेसर का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। Only inches. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Oh. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Best beauty beat. And you still rolling with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there.
I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vargo's dude? With the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup is trying to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Hey, what's up, homie? You all right? No, wait from me! Sample agents! Yeah, you thought I was gonna get your bitch ass up, drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vargos look routine? This is shady ass apple. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lockups. What? Get those fools! Fuck, they must have heard some shit. Find your bitch ass and cover. Fool, I ain't making no friends out here, homie. You just blast they feet. You just blast they people. That might be why they irritated. Hey, How many they got? You leaving me to get murked, fool? Get back in here. Let's get through this. You still breathing, homie? yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came in for a bite. And that motherfucker. Oh, shit, he down. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocent. Be cool, my nigga.
Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You're a psychopath. You finally fuck. राइट साइड और लेफ्ट साइड पर पोली स्टूडियो के स्पीकर्स हैं, प्लस ये वेंट पैनल है। इस लैपटॉप में आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, जस्ट आप एसएसडी ही अपग्रेड कर सकते हैं।